prepared short question answer, long question answer in a single video only. So first question important you can think of it is discuss briefly the social causes of फ्रेंच रिवोल्यूशन ऑफ 1789। तो क्या कॉजेज़ क्रिएट किए थे? फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंच रिवोल्यूशन वाज ड्रिवन बाय डीप सोशल इनइक्वालिटी अमॉन्ग द थ्री स्टेट। द फर्स्ट ईस्ट स्टेट क्लर्जी, सेकेंड ईस्ट स्टेट nobility enjoyed privileges including tax exception. The third state which include peasant worker bourgeoisie board tax burden, मतलब उन लोगों के पास बर्डन रहता है टैक्स पे करने के लिए, एंड उन लोगों के पास हैड अ लिटिल पॉलिटिकल पावर। एनलाइटनमेंट आइडियाज़ ऑन इक्वालिटी एंड लिबर्टी चैलेंज द फ्यूडल सिस्टम। तो इस सिस्टम को चैलेंज किया जो एनलाइटमेंट का आइडियाज़ था। इकोनॉमिक हार्डशिप, राइजिंग फूड प्राइसेस एंड फेलियर ऑफ रिफॉर्म्स इंटेंसिफाइड अनरेस्ट। द इनइक्वालिटी रिसेंटमेंट अल्टीमेटली triggered the revolution. Okay, next question है, do you think Moscow invasion was responsible for fall of Napoleon I? क्या रीज़न था? तो इसका रीज़न सही में मॉस्को इन्वेशन था जिसके वजह से ख़त्म हो जाता है नेपोलियन I का रूल और उसी के स्टार्ट हो जाता है उसका बिगनिंग टू डिक्लाइन देयर रूल। ओके, तो ये क्वेश्चन है थोड़ा रीड आउट कर लेना बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रीड ऑल दैट क्वेश्चन आंसर। एंड इसका टॉपिक है फ्रेंच एंड नेपोलियन, जो रिलेटेड जितना सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड नेपोलियन के टाइम का, तो मैंने इसी में इंक्लूड किया। क्या क्या फैक्टर है जो एट्रीब्यूट करता है वीकनेस ऑफ बॉर्बन मोनार्की ऑन द ईव ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन? क्या क्या रीज़न है? वॉज फ्रेंच रिवोल्यूशन अ बॉर्जवाज रिवोल्यूशन? यस ऑब्वियसली, बिकॉज उन लोगों का आइडियोलॉजी चैलेंज हो रहा था। उन लोगों के पास कोई पावर नहीं था, उन लोगों को एंशिएंट जो रिज़ाइम थे वो लोग वही फॉलो करते थे, बट दे डिमांडेड रिप्रेजेंटेशन, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड एन एंड टू feudal privileges through peasant or worker. They played roles revolutionary goal aligned with bourgeois ideals, property right, constitutional government and free enterprise. The rise of Napoleon court solidified this outcome. नेपोलियन वॉज चाइल्ड ऑफ रेवोल्यूशन, इसी की वजह से बहुत सारे रेवोल्यूशन होता है, ये भी एक तरीका का सही है। बट वेयर द चीफ फीचर्स ऑफ कोड ऑफ नेपोलियन? क्या फीचर्स था? तो मैं डिस्कस कर देती हूँ। कोड ऑफ नेपोलियन या नेपोलियनिक कोड है जो ये फॉर्म होता है 1804 में। यूनिफाइड फ्रेंच सिविल लॉ की फीचर इंक्लूड लीगल इक्वालिटी फॉर ऑल मेल सिटीजन, एबोलिशन ऑफ feudal privileges and protection of private property, standardized laws across France, promoted secular civil institution, included marriage, divorce. It upheld paternal authority and limited women's right. While authoritarian in nature, it reflected enlightenment revolutionary ideas. The code influenced legal system across Europe and beyond. How did continental system precipitate the downfall of Napoleon Bonaparte? तो किस तरह रिस्पॉन्सिबल? इसके वजह से इकोनॉमिक ब्लॉकेड होता है, बैन हो जाता है, यूरोपियन ट्रेड को बैन किया जाता है एंड इसके बैकफायर में डैमेज हो जाता है यूरोपियन इकोनॉमिक्स मोर देन ब्रिटेन्स। मेनी नेशन रिजेंटेड ब्लॉकेड एंड डिफाइड इट, लीडिंग टू एनफोर्समेंट कैंपेन लाइक इन्वेंशन ऑफ रशिया। द पॉलिसी isolated France diplomatically, strained alliance and provoked resistance across Europe. The system's failure weakened Napoleon Empire and contributed significantly to his ultimate defeat. इसके वजह से उन लोगों का अल्टीमेटली डिफीट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोगों का है व्हाट इज़ कॉन्टिनेंटल सिस्टम एंड इसका सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस क्या है? तो एक बार रीड आउट कर लेना बिकॉज एवरी क्वेश्चंस को डिस्कशन करना इट विल create a long video, but I want to save your time and you can screenshot all these lines from this video by pausing this video. तो नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ दैट टू व्हाट एक्सटेंट वाज पेनिनसुलर वार रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनफॉल ऑफ नेपोलियन वार? क्या रीज़न है? नेक्स्ट हम लोगों का जो यूनिट 2 का टॉपिक है दैट इज़ रेस्टोरेशन एंड रिएक्शन इन यूरोप। तो क्या इम्पैक्ट हुआ था जुलाई रेवोल्यूशन का जो हुआ था यूरोप में?
तो हम लोगों को नाम से ही इंटरेस्टिंग रेवोल्यूशन, इससे पहले हम लोग डिटेल्ड वे में फ्रेंच रेवोल्यूशन रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस की हूँ, एंड आप लोग देख लेना अच्छे तरीके से. Next, the July Revolution of 1830 in France led to the fall of Charles X and the rise of constitutional monarchy under Louis Philippe. It inspired liberal and nationalist movement across Europe, especially in Belgium, Italy, and Poland. Although many revolts were suppressed, the revolution showed that old order could be challenged. It marked a shift toward constitutionalism and encouraged future revolution, especially the widespread uprising of 1848. नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सिग्निफिकेंस है जुलाई रेवोल्यूशन, क्या इंपॉर्टेंस है. नेक्स्ट, जुलाई रेवोल्यूशन रिलेटेड ये टॉपिक था, तो पॉज करके देख लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूवमेंट ऑफ नेशनल एस्पिरेशन क्या क्या था. कार्बोनरी मूवमेंट के बारे में भी डिस्कस हुआ है, और क्या ही इम्पोर्टेंस था फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ था 1848. हम लोगों का मैज़ीनी कंट्रीब्यूशन कैसे किए थे यूनिफिकेशन ऑफ इटाली के लिए. तो ये सब कुछ फ्यू क्वेश्चन आंसर्स है. तो हु रोड द पैम्पलेट, व्हाट इज़ थर्ड स्टेट, व्हाट वाज इट सब्जेक्ट, who was Psychocrats, what was importance of year 1453 in European history, the fall of Constantinople to the Ottoman Turks, marking the end of Byzantine Empire and changing trade route. Who was the last king of Valois dynasty? Henry III. When War of Roses take place in England between 1455 and 1487. Who was called navigator? Prince Henry of Portugal. What do you mean by 95 Theses? A list of criticism against Catholic Church by Martin Luther. In 1517, sparkling the Protestant Revolution. Name the author of the book The Prince, Niccolo Machiavelli. In which Italian city was the breaking house of Medici based? Florence. Which two European powers contested over Italy in 15th century? France and Spain. Who painted The Last Supper? Leonardo Vinci. Who was the author in Praise of Folly? Erasmus. Who were the encyclopedists? Enlightenment thinker who compiled knowledge in encyclopedia led by Dedorant and D'Alembert. What is the real name of Voltaire? Francois Marie Arouand. Who is the author of Candide? वोल्टायरी जैसे प्रोनाउंस करना कर लेना. बट इज़ कॉन्साइल जी स्टार्ट, अजीब अजीब नाम्स है ये सब. देख लेना आप लोग. वो वेयर गैबिली एंड ताइली. टैक्सेस उनसे है असॉल्ट गैबिली. लैंड प्रॉपर्टी में जो टैक्स होता है उसका ताइली. Who were sons culottes? How many types of bourgeois were there in French in 1789? इसमें भी कैटेगरीज है, तो 3 तरीके के थे. वेल्थी मर्चेंट, स्मॉल शॉपकीपर और आर्टिशियंस लोग. ब्रेड राइट क्या हुआ था. What were the Kiers de Lorenances? Name one French philosopher of 18th century. Jean-Jacques Rousseau. Who took the tennis court or oath, and why? Member of third estate swore to form National Assembly until a constitution was made. When did third estate assume the time of National Assembly? 17 June 1789. Who was authored a conservative Napoleon signed the Concordat with Pope. Who was Pope? कौन था? ये सब क्वेश्चंस थोड़ा सा रीड आउट कर लेना, बिकॉज
एक ही वीडियो में मैं सोच रही हूँ इंक्लूड कर दूँ 1 मार्क्स 5 मार्क्स एंड 10 मार्क्स क्वेश्चंस आंसर। और बैटल ऑफ वाटरलू कब हुआ था? 1815 में। वेयर वॉज नेपोलियन फाइनली एक्साइल्ड? सेंट हेलेना। ये सब क्वेश्चंस हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन जो हम लोगों का है, इट इज़ लाइक दिस, व्हाट वाज रिफॉर्म बांकियट? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 से लेकर, हु हेडेड फ्रेंच मिनिस्ट्री ऑन आई ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, नेम द डायनेस्टी दैट वाज इन पावर in France at that time. The French ministry was headed by Charles X. On eve of February Revolution, the dynasty in power was Bourbon dynasty, which year was called Europe Year of Revolution. Who was president of Second Republic, Emperor of Second Empire in France? कौन था? और कुछ क्वेश्चन से उतना बट डिस्कस करने के तो बहुत ज़्यादा ही लॉन्ग वीडियो है। बट वॉज कन्वेंशन ऑफ गैस्टियन। कन्वेंशन ऑफ गैस्टियन जो हुआ था, एक एग्रीमेंट हुआ था ऑस्ट्रिया एंड प्रूशिया को डिवाइड करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन का। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आंसर डिस्कशन हुआ। थोड़ा सा स्टॉप कर लेना, रीड आउट कर लेना, स्लो वीडियो कर लेना, ताकि आइडिया मिल जाए कि क्या क्या है। बिटवीन हुम वॉज द ट्रीटी ऑफ विला फ्रांका साइंड? किसके किसके बीच में? बिटवीन फ्रांस नेपोलियन III एंड ऑस्ट्रिया एम्परर फ्रांस जोसेफ I in 1859. Who was Victor Emmanuel II was the king of Sardinia, Piedmont, and later become first king of unified Italy. Which king Piedmont become king of Italy? Same name. What does the slogan Italia Faradesa mean? Who campaigned it? तो गैरिबाल्दी। अब रिलेटेड क्वेश्चन है। मैजिनी गैरिबाल्दी दोनों ही हैं। कौन स्टैब्लिश किया था? जियोसेपी मैजिनी स्टैब्लिश्ड यंग इटाली टू प्रमोट द आइडिया ऑफ यूनाइटेड इंडियन रिपब्लिक। हु वाज कैवियर? कब हुआ था वॉर? वाटर शेल्ड ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री क्या होता है? व्हाट इज रिसॉर्जिमेंटो? विच फॉरेन पावर वेयर्स involved in unification, and how name to power from Italy acquired Venice, and how and when and how was unification of Italy completed? What was Borsian Jaftan? ये कैसा नाम है? नेशनल स्टूडेंट एसोसिएशन इन जर्मनी, एडवोकेटिंग जर्मन यूनिटी एंड लिबरल रिफॉर्म। थोड़ा सा टर्म सब न्यू है ना हम लोगों के, मेरे लिए तो न्यू है, बट मैं सोच रही थी कि वीडियो बनाऊँ, शेयर करूँ इन्फॉर्मेशन, क्वेश्चंस को शेयर करूँ, ताकि सभी जो ये सब्जेक्ट लेकर पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, तब ये फुल वीडियो देखेंगे। उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये सब क्वेश्चन आंसर्स पूरा। बहुत ही 1 मार्क्स के लिए मैंने बहुत सारे डिस्कस किए हैं। बाई विच नेम इज़ द बैटल ऑफ साडुआ ऑल्सो नोन द बैटल ऑफ कॉनिकेरेज? कैसे प्रोनाउंस करेंगे ये देखना पड़ेगा थोड़ा। Who sent the M's telegram with what objective? Between whom was the Battle of Sedan fought in which year? Which year Bismarck get Austro-German alliance signed? Against which power was it directed? In 1873, directed against France and Russia. Who motivated Italy to join Triple Alliance? कौन किया था? फ्रांस किया था। What was the incident of dropping of the pilot? क्या incident? Who claimed the honest broker and why? What do you understand by drunk Nachosten? क्या होता है? Drive to East, German expansionist policy toward Eastern Europe. Why was Turkey known as sick man of Europe? Due to Ottoman Empire political and economic decline हो गया था हम लोगों का 19th century में। What was the Eastern question? क्या क्वेश्चन था? Diplomatic problem concerning the decline of Ottoman Empire and control of its territories. When the Congress of Berlin
convinced and who presided presided over Congress? Otto von Bismarck. ये पहले भी नाम पढ़ सके हैं. Tubal Constate, Serbia and Bulgaria. By which treaties were the first and second Balkan War concluded? तो ये दो treaty था, Treaty of London and Treaty of Bucharest. Which period is known as Age of Imperialism in Europe? Late 19th century approx, due to colonial expansion and competition about European power. ये सब क्वेश्चन था. World politics who advocated it? 1908 question. Which year between whom was Triple Alliance signed? Triple Alliance किसके बीच में साइन किया गया है? तो देख लेना. Which country formed Triple Entente? Who sent Kruger telegram, the ego of which year the first Moroccan crisis arise? In which year did the second Moroccan crisis arise? And last question is, what was Agadir crisis? A German naval deployment to Agadir, Morocco in 19 tension with France and Britain. बहुत ही क्वेश्चन है. Name German warship that arrived at Agadir due to Moroccan crisis. SMS Panther. In which year the Haldani mission sent 1912? Who was Gavrilo Princip, the Bosnian Serb nationalist who assassinated Archduke Franz Ferdinand? Next, who was World War I tragedy miscalculation and why? Whose assassination was on 28 June 1914, sparked of the First World War. Archduke Franz Ferdinand of Austria-Hungary. And see what is the coincidence today. I can share you the date. See, today is also 28, means before so many years, same day only, they have assassinated a person of whose name is Archduke Franz Ferdinand of Austria-Hungary. And the last question is like this: who was the ruler of Germany when First World War began? Casher Wilhelm. For this video, see you in my next video. Till then, take care. Bye. Bye.